So hello everyone, welcome back to Visual Coding. So in my last video, we have learned how to create series using Panda library. So with the same example, we will continue and now we will understand some of the functions related to series, which are oftenly asked in the exam. So here on the screen, you can see we have created this code. We have designed this code where we have executed and some series data is formed. So let us run the program and see the output. Yeah. So this you can see. Let me explain you first once again. I have import one library that is Panda as P. Again मैं फिर से कहूँगा the P is just a variable name, object name है, Panda object हम इसे कहेंगे. ये आप X, Y, Z कुछ भी ले सकते हैं. There is no compulsion of taking P, right? Second, X is a list. हमने लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट को हमने सीरीज में कन्वर्ट किया है. सो लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड है, सीरीज फॉर्म में डेटा स्ट्रक्चर बनेगा विच इज सो डायनामिक एंड वी कैन डू मल्टीपल ऑपरेशन बेस्ड ऑन द सीरीज. वाई इज इंडेक्स. ठीक है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स इज 0 1 2 3 4. अगर आप इंडेक्स देते हैं ABCD या एनी अल्फाबेट, एनी रोमन नंबर भी आप दे सकते हैं, तो इट्स ओके. अगर आप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट विल डिस्प्ले द इंडेक्स 0 1 2 3. ओके, so this particular line we use to create series. Here X is a list and Y is again another list, but it will create index and the output you can see on my left side screen. Fine. Okay, let us move to the next section. अब हम इसमें कुछ फंक्शन देखते हैं, बिकॉज एग्जाम में बेस्ड ऑन दैट फंक्शन आपसे उस कोड का आउटपुट पूछा जा सकता है. तो जल्दी से हम इस फंक्शंस को कवर अप करते हैं. सो द फर्स्ट फंक्शन है इंडेक्स. ओके, सो इंडेक्स देखिए ये वो फंक्शंस हैं जो बहुत कॉमन है और आपको डेटा फ्रेम में भी सिमिलर फंक्शंस देखने को मिलेंगे. सो आई विल यूज प्रिंट स्टेटमेंट सो दैट वी कैन सी आउटपुट and my series is s. series variable name is s dot. ठीक है, the moment मैंने यहाँ पर s लगाया print statement, so it is automatically a dialog box appear which is telling the other operations which you can do in print operation, print function. ठीक है, s dot index. देखिए s dot index ये क्या करेगा. फाइन, लेट अस सी s डॉट इंडेक्स. बहुत सिंपल है, आपकी सीरीज की इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा. ये देखिए, दिस इज द आउटपुट. आई होप यू कैन सी द हाईलाइटेड. आई हैव हाईलाइटेड द आउटपुट. सो इंडेक्स क्या कर रहा है. इंडेक्स फंक्शन विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ सीरीज, ओनली इंडेक्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. देखिए आउटपुट कैसा आया, इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. सिंपल द वे वी राइट इंडेक्स, सिमिलर it reflect. DType equal object, it means it's a string data type, character data type. जहां पर होता है तो वो आपको ऑब्जेक्ट लिखता है, और अगर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होती तो ये int आपको रिफ्लेक्ट करता. सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. चलिए नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं. अगला सिमिलर फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन फंक्शन. देखिए इन फंक्शंस को रटने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप लिखते हैं वैल्यूज, अगर आप ध्यान से इन फंक्शंस का नाम देखें, सो द सिमिलर नेम ऑफ द फंक्शन इज द आउटपुट. जब आप लिखते हैं वैल्यूज तो ये आपको ओनली वैल्यू रिटर्न करता है. दिस पार्ट ओके, हाईलाइटेड. सो एस डॉट वैल्यूज, एस सीरीज की वैल्यूज को ओनली वैल्यू ये रिप्लाई करेगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, बट देयर इज नो कॉमा. ये याद रखना है, जब एग्जाम में आप आउटपुट लिखें तो प्लीज कॉमा ना लगाएं. इफ यू पुट comma also there is no harm, but we suggest the way Python is display the output, better you write it this way.
ओके, जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर को, और हमारा नेक्स्ट फंक्शन है साइज। देखिए क्या करता है, एस डॉट साइज, सॉरी साइज। तो देखिए साइज फंक्शन क्या करेगा, साइज, या यू कैन सी हियर द लास्ट आउटपुट 5 आई हैव हाईलाइटेड ऑन माय आउटपुट स्क्रीन। आप जूम करके देख सकते हैं इसे। तो साइज क्या करता है, इट विल रिटर्न नंबर ऑफ एलिमेंट। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइन। साइज आपको बताएगा एक्चुअली द साइज ऑफ सीरीज। तो साइज में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपकी सीरीज में है वो आपको रिटर्न करेगा। सो वी हैव 5 एलिमेंट, दैट्स व्हाई द आउटपुट इज 5। मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, फिर से हम चलते हैं प्रिंट एस डॉट शेप। देखिए साइज और शेप में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट द सेज शेप फंक्शन क्या करेगा, shape function देखिए ये, let me run and see the similar output, it is there, but what is the difference? There is a difference between shape and size. एक्चुअली देखने में एक जैसा लगता है, 5 वो भी है 5 ये भी है, बट यहाँ पर अगर आप देखें, so the output is in the form of round bracket with comma, so it returns the number of element in form of tuple. Okay, उसने क्या किया, I'll write in a comment box, tuple form, number of element in tuple forms. It's not accommodated. A little decrease the size. ठीक है, so number of elements tuple form. Clear? Yeah. So you can see the difference between shape and size. इसीलिए मैंने दोनों फंक्शन एक साथ लिख दिए हैं। साइज आपको प्योर इंटीजर वैल्यू दे रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, whereas shape फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है द सिमिलर आउटपुट बट इन द फॉर्म ऑफ टपल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन क्विकली हम मूव करते हैं। प्रिंट, सॉरी टू टाइम p, इट्स प्रिंट s dot DType. DType stands for data type. DType stands for, I'll write the comment. I hope you people know कि hash symbol जिसे आप hash tag कहते हैं, but ये tag नहीं है यहाँ पे. It's a simple hash we use for single line comment. So whatever I'll write in front of hash symbol, it will not be executable by the compiler. तो आपको DType फंक्शन क्या करता है, देखिए डेटा टाइप आपको आपके सीरीज का डेटा टाइप रिटर्न करेगा, बट क्या आउटपुट आएगा देखते हैं। देखिए int64, व्हाट डज इट्स मीनिंग, int64, इट मींस सी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट आर ऑफ इंटीजर टाइप। ठीक है, सारे इंटीजर वैल्यूज हैं 64 बिट, सो द साइज ऑफ इंटीजर इज ऑफ 64 बिट। आउटपुट आया है इसलिए 64 लिखा है। इन एग्जाम में अगर आप INT भी लिखते हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज करेक्ट आंसर। अब देखिए जैसे ही मैं अगर वैल्यू को चेंज करता हूँ, सपोज 15.5, 16.7, 17.2, जस्ट सपोज, लेट्स सी व्हाट आउटपुट इट विल गिव। हमें सारे ही केसेस को समझना होगा। देखिए आउटपुट चेंज हो गया, इंटीजर नाउ कन्वर्टेड इनटू फ्लोट। ओके, बिकॉज वी हैव फ्लोट नंबर, लेकिन कुछ नंबर इंटीजर में है, कुछ नंबर फ्लोट में है। इट डज नॉट मैटर, अगर एक भी नंबर फ्लोट में होगा तो वो आपको आउटपुट फ्लोट ही देगा, बिकॉज this is called internal data conversion, and the compiler will reply all the higher end of the data type. So float has a higher precision than the integer, that's why it will return the float. Okay, moving
next function. Moving to the next function, print. Okay, s dot n bytes. In bytes. In bytes. You can guess n. N means number of bytes of underlying data, यानी कि सीरीज, यानी जो भी है, कितनी बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करा. चले पहले रन करते हैं, देन विल डिस्कस. 40. ठीक है. अब 40 कैसे आया? ईच फ्लोट, ईच नंबर ऑक्यूपाई 8 बाइट ऑफ स्पेस. ये याद रखना है आपको. ईच डेटा, ईच एलिमेंट ऑफ सीरीज ऑक्यूपाई हियर द 8 बाइट ऑफ स्पेस. तो हमारे पास 8 एलिमेंट्स थे. 8 5 जा 40. देखिए अगर मैं एक बढ़ाता हूं तो क्या होगा. सपोज 33 अगर मैं ऐड करता हूं, एंड लेट्स चेक द डेटा टाइप. सॉरी, इसलिए एरर आया बिकॉज आई हैव टू स्पेसिफाई देन वन मोर इंडेक्स. एफ कर देते हैं. फाइन, लेट अस चेक. ओके, यू कैन सी 48 नाउ बिकॉज 8 6 are 48. 8 byte per digit, and there are 8 digits, so 8 numbers, sorry, 8 elements, 8 bytes into the 6 element makes 8 6 are 48. So we can write here number of bytes. आपके सीरीज ने कितने बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई किया है मेमोरी में, दैट इज द मेन output of this function, the main role of this function. Okay, another very important, very common function, बड़ा आसान सा. देखिए जितने भी फंक्शन हैं वो सब बहुत कॉमन नेम पे चल रहे हैं. n dim, number of dimension. I'll write here number of dimension. So the number of dimension, देखिए क्विकली हम देखते हैं. 1. ओके, हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में देखा था. सीरीज इज वन डायमेंशनल डेटा टाइप, सो इट विल ऑक्यूपाई the number of element in a series only, so that's why the output is 1. So ndim in case of series always return, does not matter kitne bhi element ho, it will always return 1 because it's a one dimensional data type. When we learn data frame, similar function we will use, so it will return 2 because data frame is a two dimensional data type. We have rows and columns. Okay, yeah, moving to the next, and I think it's the last, almost the last function. We'll give s dot empty. So this is a very empty, right? It's a very easy function. As name indicate, it returns the boolean value. आपको empty function true false return करेगा, will return boolean. अगर इसमें कोई element नहीं है तो ये आपको true return करेगा, और अगर if there is even a single element, then it will return false. So the output is false because in my series there are elements, there are 6 elements. If there is no element, then it will return true, otherwise false. Okay, so I'll mention here returns boolean value. So boolean, I mean true and false. Okay, fine. So these are the functions related to the series. Let us quickly revise. So the first, we have created a series with the index a b c d e f, and index function will return the only index in the form of list. Value function will return the values in the form of
again list. Size function will return the number of size. देखिए यहाँ पे size 6 आया है. So the size function return the number of elements in integer form. Remember, number of elements in simple integer form. Whereas shape, this shape function will return the similar thing but in the form of tuple. I have highlighted both the code and output. Shape function will return the number of elements but in the form of tuple because there is a comma and round bracket. DType function returns the data type. You can see here float 64 because there are some value in the form of decimal. Does not matter अगर एक भी value decimal में होगी तो ये float ही return करेगा because float has a higher precedence as compared to the integer. N bytes will return the number of bytes. देखिए number of bytes कितनी byte का space occupy किया आपकी series ने. फ्लोट में एक एलिमेंट 8 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करता है. दैट्स व्हाई 6 into 8 makes 48. That's why it's a 48 answer. And dim number of dimension as name indicate. Series always as a one dimensional data structure, so it will always return 1. Does not matter आपके लिस्ट में सीरीज में कितने भी एलिमेंट हो, but it will return always 1. And at the last, empty function will return true, false. If series has no element, then it will return true. And if it has some element, even one element, even a single element, then it will return false because it has elements. Okay. So this is one very simple functions. अगर आप केवल इन functions का नाम भी ध्यान से पढ़ लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है. ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होने वाला है. Okay, fine. So we'll move to the another segment of this series in the with the same example. So I'm taking the similar code. Let me copy the code and we'll move. Okay, now the similar series I have, but now we will learn about the slices. Okay, so I will execute the code once again and देखिए ये हमारे देखिए इवन एक सिंगल एलिमेंट भी अगर डेसिमल वैल्यू कैरी करता है, सो जहां डेसिमल नहीं है वहां पे ऑटोमेटिक 0.0 इसने लगा दिया है. तो दैट्स व्हाई बिकॉज द फ्लोट हैज अ हायर प्रेसिडेंस. चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं एंड विल अंडरस्टैंड नाउ लिस्ट स्लाइसेस और द सीरीज स्लाइसेस. ओके, विल स्टार्ट. प्रिंट s 0 4 1. This is basic slicing the way you did in list in class 11. बेसिक स्लाइसिंग है. देखिए यहाँ पे क्या हुआ है हम समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड. ओके, तो ये क्या आया और क्यों आया, कैसे आया. देखिए सबसे पहला व्हाट इज द फॉर्मेट, हम समझेंगे फॉर्मेट क्या है. सो द फॉर्मेट इज द फर्स्ट इज द स्टार्ट कॉलन के बाद दूसरा आप जो देख रहे हैं वो है एंड प्लस 1. एंड से एक ज्यादा और तीसरा है स्टेप वैल्यू. ये इस स्लाइसिंग का आप जो देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं एस लिख दूं, ये फॉर्मेट, राइट. सो द फर्स्ट नंबर इज द स्टार्ट इंडेक्स. स्टार्ट इंडेक्स. चलिए मैं फिलहाल इस इंडेक्स को हटा देता हूं, आपके लिए इजी हो जाएगा समझना. यस, फाइन. तो अब मैंने सीरीज से फिलहाल इंडेक्स को हटा दिया है. इस इंडेक्स विच आई वांट. नाउ द बाय डिफॉल्ट इंडेक्स विल कम. सी the elements are appearing with the default index, that is 0 1 2. Okay, integer.
Now, what is the meaning of slices? See, the first I have written 0. It means 0 is a start index. Okay. 4 is a end plus 1. याद रखिए 4 अगर मैंने लिखा है end plus 1 मतलब 3 तक आपको जाना है. ये already plus 1 value है. If I'm writing 4 here, then you have to go up to 3, third index तक. और third index भी 0 1 2 3 इस third index तक आपको जाएंगे. देखिए यहां तक आपको जाना है. And the 1 is the step value, mean you have to skip one element, you have to jump one element. It means 1 by 1 each element be accessed. इस step value है. देखिए तो जब मैंने एग्जीक्यूट किया इस कोड को, देखिए इसने क्या आउटपुट जनरेट किया. दिस पार्ट. हाउ दिस पार्ट? बिकॉज माय स्टार्ट वैल्यू इज 0. करेक्ट. स्टार्ट इंडेक्स इज 0. I have to go up to 3 because 4 is written, so up to 3. And one step means with the step value of 1, यानी कि एक एक स्टेप आगे बढ़ना है. तो ये आपका जो आउटपुट आया है, दिस इज ऑफ दिस स्लाइस. एंड बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप फ्लोट 64 लिख रहा है. उसकी जरूरत नहीं है आपको समझने की. उसकी मतलब आपको एग्जाम में नीड नॉट टू राइट फ्लोट 64. फाइन. This is first slice, the basic slice. Let us move to some more cases. Print. अगर मैं इस स्लाइस में 6 लिख देता हूं, सॉरी, एस स्क्वायर ब्रैकेट, या ठीक है. अब 6 देखिए, आई डोंट हैव 6 इंडेक्स इन माय सीरीज, बट स्टिल आई एम राइटिंग 6. कोई बात नहीं, डजंट नॉट मैटर. अब 6 छोड़िए, आप 10 भी लिख देंगे, देयर इज नो इशू, बिकॉज कंपाइलर विल रिटर्न till where you have series element. Let us see the output. Okay, it has written all the elements because आपको 5 तक ही जाना है. ये ऑलरेडी एक ज्यादा है. अगर आप यहाँ पे 8 भी लिख देंगे, then also the output will be the same. Okay, so when I'm writing 6, when I'm typing here 6, so 6 means till 5 you have to, till 5 you have to. अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इस स्टेप वैल्यू को 2 कर देता हूँ. What it will do, it will jump the element. First it will retrieve 0 because 0 से स्टार्ट हुआ. अब ये जंप करके 2 में आ जाएगा. 1 को 2 स्टेप it will move forward. Then it will go to 4. चेक कर आउटपुट रन करें. यस, या ओके. तो दिस इज द आउटपुट. आप देख सकते हैं it shows the 0, then 2 and then 4. Because I have the step value 0, then 2 and then 4 because the step value is 2. So 2 step value means 2 का jump. फाइन, चलिए आगे मुझते हैं. नेक्स्ट केस. बहुत सारे केसेस हैं इसमें, हम कोशिश करेंगे सब कुछ कवर करने की. एंड अगर मैं कर दूं ओनली 4, I haven't mentioned anything. So what it will return? When I do not put any colon symbol here and if I mention 4 only, so the compiler of Python will return only the element at the 4th index. याद रखना, it will return the element at the 4th index only. देखिए, और element at the 4th index क्या है? 19.0. The similar is the output, right? So colon होने से difference आ जाएगा. I'm writing element at 4th index. यहाँ पे कोई step value कुछ नहीं लगेगा. बट अब देखिए प्रॉब्लम आ गई. अगर मैं लगा दूं 4 s 4 colon, then meaning will be changed. The meaning will be changed. अब 4 colon आगे कुछ भी नहीं. So what it will do, it will start retrieving the element from the 4th index until last it will print all the. देखिए ओके, 4th से स्टार्ट किया 5th तक आ गया क्योंकि हमारे पास एलिमेंट 5th तक है.
अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, 3 देखिए क्या आउटपुट आया, 3 4 5, right? So start index is 3 and is not mentioned, step is not mentioned. So remember, when end is not mentioned, it will retrieve whole series element, and if step is missing, the default step value is 1. Remember, the default step value is 1. एक और केस देखते हैं, प्रिंट अगर मैं इस कॉलन को पहले, अगर मैं स्टेप वैल्यू को पहले लगाता हूं तो क्या होगा? देखिए पहले लगाने से व्हाट इज आउटपुट, द मीनिंग विल एंटायरली चेंज. क्या होगा? देखिए पहले लगाने से आपकी जो स्टार्ट वैल्यू है वो डिफॉल्ट 0 हो जाएगी. याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डिफॉल्ट डिफॉल्ट start equal 0, okay, and step equal 1, right? So in this case, the 3 is the end plus 1 value. 3 is the end plus 1 value, इसलिए इसने start 0 लिया देखिए, और स्टेप वैल्यू को 1 लिया है आउटपुट में, और एंड वैल्यू क्या है 2. आपको 2 plus 1 यानी कि 3 लिखा है. So it will retrieve up to 2 only, because this, in this case, the end value is the 2, and here if it is 3, it means this is n plus 1. Okay, I hope the slicing concept is clear to you. There are certain more function, मैं आपको इसके और function बता दूं. If I write print s dot tail and say 2, देखिए टेल 2 क्या करेगा, आपके बॉटम से 2 एलिमेंट को रिट्रीव करेगा. ओके, यू कैन सी द आउटपुट, tail 2 will retrieve bottom 2 element from the list, and if I type print head s dot head 2 or 3, whatever you mention, so from top, head will retrieve, see the output, head will retrieve from top the 3 elements from the top. 3 means top 3 element. यहाँ पर index का कोई रोल नहीं है. The number, the parameter here inside the head and tail function are the integer number that retrieves the number of elements from the series. Okay, so this is all about the function and the slicing of series. Let us see sample paper का हम एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं. देखिए ये sample paper CBSE ने जो दिया है, as per sample paper, this is the question, and this is a very simple series, but what this will print, a is greater than 45. तो देखिए ये क्या प्रिंट करेगा, जो भी वैल्यू a से ग्रेटर है वहां पे ट्रू रिटर्न करेगा. आप देखिए केवल एक ही वैल्यू है जो 45 से ग्रेटर है, इन दैट केस it will return true, then otherwise for rest it will return false. Let us see in our case. Let us try one function. So if I write print s is greater than, और my element suppose मैं अगर लिख दूं इसमें से 17, ठीक है, क्या करेगा, सी, राइट. So 0 element at the 0 index is 15.5, which is less than 17, false आ गया. 16.7 less than 17, false आ गया, और बाकी की सारी वैल्यू ग्रेटर देन 17 है, इसीलिए ट्रू आ गया.
So the similar case is that it's a very common question, but बच्चे गलती कर सकते हैं. So this is one of the sample paper question asked in exam, and there is one more question in sample paper. This to display last 5 rows of series object S, you may write. So this will be the output, head, tail, tail 5. So this will be the output. आपको लास्ट 5 रो सीरीज की उठानी है, लास्ट 5 एलिमेंट्स उठाने हैं. यू राइट टेल 5. ओके, आई होप you understand. In case of any query, please comment. I will definitely reply. So this is all about the series, how do we create, and the functions of series. Please revise it once again. These are very common and very easy functions. We will discuss about data frame in my next video. Till then, keep learning, keep growing. Thank you so much.